तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं सेकंड यूनिट। मैंने आपको सारे नोट्स, दोनों यूनिट्स के नोट्स एक ही वीडियो में कर दिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, बिकॉज इसमें से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। लुकिंग एट द इम्पोर्टेंस, रिचनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस enjoyable, interesting and easy. In language learning, enjoyment and success go together. That's why a great emphasis is not a teacher or to create a more informal atmosphere and enjoyment as positive factor in overcoming an anxiety. देखिए गाइस, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लग रहा है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ आएगा या आप लोग लिख नहीं पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ games in the classroom, as the success of games depend on its organization, the teacher has to be very careful while organize game in the classroom. He has to be careful about the division of team or groups. A fresh or new division as far as possible should be made. द ग्रुप शुड बी इवेंचुअली मेच्ड इन एबिलिटी द नंबर्स, मतलब इन सब चीज़ों को क्लासरूम में ऑर्गेनाइज करते हुए गेम पर ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है द ग्रुप शुड बी इवनली मैच्ड इन एबिलिटी एंड नंबर्स। गेम्स मस्ट बी वेरी वेल अनएक्सप्लेन्ड बिफोर हैंड इन द क्लास। इफ नेसेसरी मदर टंग में बी यूज्ड। वन और टू एग्जाम्पल मस्ट बी गिवन बाय द टीचर. The teacher must take part as a leader. Teacher own participations can bring better result. Game should be within the linguistic capacity of child. Scoring is also necessary to arise real team spirit. The teacher can make the team also. And any effort that makes the learning go with an extra swing to worthwhile, it is the essential, however, that the language game lessons should be well prepared and pleasantly and brightly conducted so that the learner actively use the language most of the time. A few games as examples are given below, but the teacher should always be imaginative and in search of new games. Some games like recognition games, word building games, chain spelling, word ladder, etc. Reading and writing development of games. Recognition games. Divide the class in two teams. Place a large tray of object flashcard with pictures on them front of class. देखिए guys, पढ़ लीजिएगा. Word building, word leader, chain spelling. The word used in a thing game of may be limited to a category such as verbs, nouns, adjectives, prepositions, and words of similar words. One player begins by spelling or writing a word in the category decided upon. The next player must spell or write a word in the next category. देखिए guys, पढ़ लीजिएगा. एग्जाम्पल दे रखा है at, cat, rat, mat, bat, hat. In, pin, bin, tin, sin. In, pan, tan, hen, jan. All, ball, tall, call, hall. Est, rest, test, nest, best, west, chest. पढ़ लीजिएगा. वर्ड लेडर, इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव वर्ब. स्मॉल जंप, लॉन्ग पुश, जेंटल होप, ईगरनेस पल्प, शॉर्ट किक, टॉल किक, लवली लाफ, येलो हाइड, वंडरफुल एंटर. डायरेक्शन. समटाइम्स small like book, pen, rubber, duster, etc. is hidden in a fairly inconspicuous place. One child has been outside the room and when he appears the door, he should be instructed by the others. देखिएगा, इस पढ़ लीजिएगा. मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, सिर्फ गेम्स के बारे में दिया गया है. आप लोग पढ़ लीजिएगा. इसको इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, सिर्फ इसलिए आपको दे दिया गया है जिससे कि आप पढ़ सकें, आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में. Thank you guys. If you like my video, please like, comment and share my video. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंग्लिश. इसमें मैंने आपको अभी तक एक भी नोट्स प्रोवाइड नहीं किया है, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ नहीं है. देखिए गाइस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसे आप देखकर आप लोग देख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा. देखिए, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं. बात आती है ग्रामर की, उसमें आपको मैं एक एक चीज़, एक एक टॉपिक आपको क्लियर कर दूँगी. तो स्टार्ट करते हैं. इसे पढ़िएगा. डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश. अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक. इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग द की वर्ड आर टेक्निक्स, मेथड एंड अप्रोचेज. एडविन एंथनी मेड अ डिस्टिंक्शन among these three levels with a specific reference to language learning. An approach is a set of assumptions dealing with the nature of language and language learning. Approaches are axiomatic. A method is an overall plan for the orderly presentation of language.
तो material no part of which contrasts all which of is based on the selected approach. In other words, it is specification of strategies of language learning. With one approach there could be several method are procedural. देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, सारी नोट्स इसलिए प्रोवाइड कर दूँ जिससे आपको अगर कहीं ना मिले तो आप लोग यहाँ पढ़ सकें। देख लीजिएगा इसको। अब आते हैं मेथड इन लैंग्वेज टेक्निक। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ नॉट न्यू, मतलब वही है कि ट्रांसलेशन मेथड कोई न्यू नहीं है, आपको पता है कितने सालों से ये चीज़ें चल रही है। इट हैज़ हैड डिफरेंट नेम्स बट इट हैज़ बीन यूज बाय लैंग्वेज टीचर फॉर मैनी ईयर्स। ये टीचर्स के द्वारा बहुत सालों से बोली जा रही है। अर्लियर इन दिस सेंचुरी दिस मेड वॉज यूज फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स, मतलब ये बच्चों के हेल्प करने के पर्पस से। एंड अप्रिसिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर, मतलब फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर को अप्रिसिएट करने के लिए। इट वॉज ऑल्सो होप्ड दैट थ्रू द स्टडी ऑफ ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज student would become more familiar with the grammar of native language of that this familiarities would help them speak and write their native language better. Finally, it was through that foreign language learning would help students grow intellectually. It was recognized that students would probably, देखिए गाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप सारा पढ़ लीजिएगा, मैंने सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करे। अब बात करते हैं द डायरेक्ट मैटर। द डायरेक्ट मैटर इज़ नॉट न्यू, इट प्रिंसिपल हैव बिन applied language teacher for many years. Most recently it was received as a method when the goal of instruction became learning how to use a foreign language or to communicate. Since the grammar translate method was not very effective in preparing students to use the target language communicatively, the direct method became popular. तो उस वक्त डायरेक्ट मेथड पॉपुलर हो चुका है। देख लीजिएगा सारा का सारा दिया हुआ है, कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता थोड़ा बहुत लिखने के लिए आएगा, वो आप लोग इतने तो नहीं है, आप लोग लिख लेंगे। तो बात करते हैं द स्ट्रक्चरल अप्रोच। द स्ट्रक्चरल अप्रोच विच कंसिस्ट ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज रेदर देन द वर्ड। ऑफ कोर्स वर्ड आर ऑल्सो selected the graded, but the main emphasis is put on teaching the student a command of the structures. Once they know these frames or patterns, they can fit word into them easily. For instance, once they know the pattern, if had been ing would have done, they can easily learn word to put into the blanks and brackets. But if they only know lists of words, they cannot possibly speak, understand, read or write a sentence. Strictly speaking, the spiritual approach should deal not only the sentence pattern but also the such things as they साउंड पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए गाइस, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, सिर्फ आप पॉइंट्स को याद कर लीजिए। यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। नाउ दे वी नो दैट द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एंड ऑल्सो व्हाट इट इज़ नॉट। वी कैन examine it, see how far it fits. Now our aim and means they are selected and grading of the structure will not solve the problem we have. It will be help us to prepare material for the teacher, because it will help us to take one thing at home, one thing to have easier thing before two more difficult ones, and to have those which can serve as good basis for teaching other things coming before the later. देख लीजिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। व्हाट वी कैन एक्सपेक्टेड द पीपल्स टू हैव नो डिफिकल्टी विद एंड, व्हाट शुड वी रिवाइज। देख लीजिएगा इसको भी। The situational approach. The situational approach is often combined with the situational approach, which means that everything that is taught should be taught in a situation or context that links the word with the things thereafter. If you want to teach, this is a book, you should actually take a book and demonstrate to people what you are talking about. The utterance, this is a book, should grow out of the situation having book and wanting to tell the peoples what its name and English. The meaning of word and structure are only the situation in they can be used. इसको देख लीजिएगा। द oral approach. It happens that the structural approach grew up at a time when the oral approach was popular. So it is usually linked with the oral approach is based on belief that easiest way to learn language. Even if you ultimately know want only
only to be able to read. It is a start orally, the teacher presenting all new material orally with the student only listening and then the student using it themselves in speech before reading or writing of a material attempted. The drill method. Beside the oral approach, the structural approach is usually linked with the drill method. Followers of the drill method believe that we learn things by hearing it, speaking it, learning it, and or writing it many times. A thing cannot usually stick in our hand if we hear, speak, see or write it only once. Only repetition can ensure retention. Until the things to be learned is so well known that we can instantaneously recall it when we need, it is not really known. Bilingual approach. This method was invented by Pro C.J. Dodson of Wales. It is a midway approach between the grammar translation method and direct method. This is method believes that while learning the mother tongue, the child has already established the concept so many objects and things in his mind. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं. मदर टंग इक्वलेंट ऑफ लैंग्वेज वर्ड्स are told in the class. Number 2, the word by word translation is done by teacher. Translation is used only when meaning of particular word is different to explain through direct method. Number third point है the mother tongue is used only initial stage. Rules of grammar are not taught separately as is done in grammar translation method. सेंटेंस इज अ यूनिट ऑफ टीचिंग. अब देखते हैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड. डॉक्टर माइकल वेस्ट ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन इंडिया एन एसोसिएशन विद इंडिया एजुकेशन स्टडीड केयरफुली द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इन इंडिया. आफ्टर कंसिडरेबल थिंकिंग ही केम टू कंक्लूजन दैट बाय फार the greater number of Indian as require only a passive knowledge of English. Indian children need most to be able to read English than to write and it lastly to speak it and understand it when spoken. ये कुछ पॉइंट्स थे, आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा. ऑब्जेक्टिव. By teaching read English, the children may be able to understand not only English people but also the people of other countries, their custom, tradition, etc. They may be able to collect information in connection with future vacation by reading English books on science, technology, medicine. देखिए गाइस, पढ़ लीजिएगा इसको भी. अब देखते हैं द ऑडियो लिंगुअल मेथड. The audio-lingual method, like direct method, has goal very different from the grammar translation method. The audio-lingual method was developed in the United States during World War. At the time, there was a need for people to learn foreign languages rapidly for military purposes. The grammar translation method did not prepare people to use the target language, while communication in the target language was the goal of the direct method. इसको भी पढ़ लीजिएगा. In the audio-lingual method, language forms do not occur by themselves. They occur most naturally within a context. The native language and the target language have separated linguistic system. They should be kept apart so that the student native language interferes as little as possible with the student attempts to acquire the target language. देखिएगा, इस पढ़ लीजिएगा. मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, इसलिए मैंने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए हैं सिर्फ इसीलिए. तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लैंग्वेज में. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो.